Hello and welcome. It's been a great evening for me because yesterday I was in Lords and what a game that was. Today I was in Beckenham and these guys were playing. I'm joined by Hamza Sheikh who scored a brilliant 84 and then after that 112 in the second innings. At one point of time, I was looking at the game and thinking that it's a dull draw, but then suddenly you guys were just speed up the things with specifically you and Ben having a partnership and Yeah, after that, when you and Thomas, started the way you guys hit Indian bowlers there, it looked like you have a plan there. But first, tell me that how do you find this team, this Indian team, and obviously your team also, because intensity wise, it looked really well, yeah, and obviously led by you, great players. Some great names also, as far as legacy is concerned. yes, There was yes. Archie, there's Rocky, we all know, but and then there's on the other side you see a Vaibhav Suryavanshi, Mm. 14-year-old, everyone talking about him. Then Ayush Matre is there, other players also. How do you see the competitiveness, your team and then this Indian Yeah, team? I mean, like, obviously, it's a very young side with a lot of big players, like big names as well. So it's obviously a good match to be a part of, and it's a great honour for me to captain the side as well. But again, like, the ultimate goal for me is to come into this side as captain and hopefully get runs and win the game. That's obviously the ultimate goal, and I'll probably say I've got one. I had one half of it and didn't quite get the second half of winning the game. But like you said, we weren't far away from it. But I think for us, like bowling them out in the third innings for whatever it was, 240, 250 was the big momentum shift. I think like the way the wickets played, the way the runs, both teams have scored 400, 500 each. Yes. And then getting them kind of wickets on that kind of surface against them kind of brought the momentum back into the game. Like you said, from afar, probably looking at it, you think about is looking like a draw. Yes. But I think the bowlers put a great work in to get them wickets, and we had 350 to chase in about 70 overs. I don't think at one point going into the chase we ever thought about kind of how we're going to play out for the draw, because I think a lot of teams would see that and be like, it's not possible, Yes. and probably start off and just back the day. But I think the way kind of we went out, the way we put pressure back on them, the way we scored runs, actually got us into a position which I think if you look back at it, you'd think you're in a very good position, like needing 110 off whatever 18, 18, 19 19 overs overs, yeah. with 6 wickets left. Yeah. But obviously, credit to the batters who kind of came in, and especially Rui, who came in Yeah. and put that kind of foot on the gas and accelerated straight away, and then got us into the actual position. But I think throughout the innings, we thought about how we're going to win this game. We're not far off until obviously got to a point where, But just on that, do you guys take motivation from the senior team also? Because this high risk, high gain approach, what Ben Stokes often talk about, Brendan McCullum often talk about. You guys take motivation from them also, that 350 in a day, 400 in a day. Last test we saw India going to 600 plus runs yeah, just to be very secure. Do you guys yeah, I take think motivation? like when you see that kind of stuff, you obviously look up. That's where you're going to play for England, Mm. and you see how they play. So some sort of way you kind of take feedback on how they see it, how they see you, how they want the game to be played. But ultimately, I think the biggest thing is how we're going to win the game. Yeah. And as much as people say about scoring quickly or going high risk, high reward, whatever that comes across, I think the biggest picture is how we're going to win the game. And I Yes. think once you start about thinking how we're going to win the game, I think things like that, you kind of naturally comes in the game and you sort it out, and you go with the flow. But I think the biggest thing was when we saw 350 off 70 overs, everyone in the change room was like, how can we get this? How can we Yes. win the game? Yeah. So I think when you get the buy-in from everyone, Yeah. then naturally around the group, you get that confidence, you get that freedom to kind of play, put pressure back on bowlers, and yeah, get us into a position where obviously we weren't far off, but to get us into that position where we could have won the game, that's probably the most important Yeah. thing. Just uh, what about these lads? This 14-year-old kid. The way he's batting, Ayush Matre, the captain on the other side, your counterpart.
Do you see that this is where the cricket is going? Means explosion, aggressive cricket, as you said, the winning mentality. How can we chase this? How can we put this much score? How can we just start, hitting the ball? Yes, there is a method to the madness, but how do you see them? Yeah, I think obviously everyone has their own game plan, everyone has their own strengths. So I think when you go out there, you kind of trust yourself, not double guessing yourself, not thinking. You just kind of see it as you play it, and it probably sounds as simple as that. But I feel like a lot of the times when some people, well, when you go out, you naturally get like stuff in your mind that you think about the situation, you think about your own performance, you think about if I play this, what's going to happen. But then going out there and just exposing yourself, playing with that freedom, I think that comes along. But again, like it depends on the surface, it depends on the situation of the game. Like if we needed 500 off 40 overs, obviously you look at it and it's not realistic. But at the same time, like I think if we ever get a sniff of if we're going to win this game, if they needed 150 and we're trying to get 10 wickets, we're thinking how we're going to get 10 wickets here. So I think the game, it plays out on its own, like it's put out in front of you. Like today's game was perfectly there, 350 and 70 overs. On another day, might be defend 180 in with 10 wickets. We see how England defended that against India yesterday. How the kind of the energy, the kind of skills, confidence they brought in the group for the bowlers to deliver it. But I guess that comes from the team, from everyone around buying in. Exactly. So no, it was good. Can you talk a little bit in Hindi and Yeah, Urdu? yeah. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Tell me about this. आप थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, अभी जी. 100 आया, 84 आया, जी. उससे पहले अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक स्लम्प ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिप हो रहा है. आप एजबेस्टन में टीम के साथ, सीनियर इंग्लैंड टीम के साथ आप 12th मैन भी जी. थे वहां पर. बट क्या कुछ हुआ है इन बिटवीन? आपके टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हुए हैं? आज आप बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे थे. आई डोंट थिंक आपने कोई मौका दिया टीम को. इस बीच आपने कुछ स्पेसिफिक किया है ऐसा जो आपके गेम को इतना बेटर कर रहा है? जी, मैंने नौशाद अंकल से मतलब सेशन लिए थे, उन लोग के साथ बहुत बात करी थी. उन लोग का बहुत शुक्र है कि उन लोग ने मुझे टाइम दिया. और नौशाद अंकल मतलब सरफराज खान के सरफराज और मुशीर के पिताजी. जी अबू. तो मतलब उनके साथ पहला मिला था, अभी इंडिया गया था जब विंटर में. वहाँ पर मतलब मुशीर के साथ मेरा मतलब अच्छी दोस्ती है Under-19 से. तो उनके थ्रू मतलब उनके अबू के साथ मेरे अबू ने जो बात करी है. फिर मतलब इंडिया में मिला था उनको, बेंगलोर में हम लोग गए थे. क्या बात हुई? तो वहाँ मतलब इरफान सर की एक एकेडमी है, तो वहाँ पर मतलब पहला मिले थे, 1-2 सेशन वहाँ करा था. तो जब मतलब इतना मुझे मतलब देखा नहीं था, 1-2 सेशन करे थे, तो मतलब 1-2 सेशन में जो उन लोग को दिखा था, उन लोग ने मतलब बताया था मुझे. लेकिन जब अभी इंग्लैंड आए थे, बर्मिंघम आए थे, मेरे घर जो आए थे, तो उन लोग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा. मतलब उन लोग ने मेरे साथ बैठा, मैचा देखी मेरी पीछे वाली जो जिसमें कैसा आउट हुआ था, कौन सी चीज़ अच्छी करी थी ने. फिर मतलब हम लोग क्लब पर भी गए थे, वहाँ बॉलर के सामने उन लोग ने मुझे प्रैक्टिस करते देखा. फिर उन लोग का जो एक स्पेशल जो प्रैक्टिस है, वो गीला कर साइड आर्म पर नाकना, स्विंग, एक्सट्रीम स्विंग और पेस पर मतलब काम करना, उस पर भी देखा था मुझे. फिर मैच में भी उन लोग को मौका मिला मुझे देखने के लिए. तो मतलब इतना जो सारा टाइम दिया मुझे, मतलब ये डिफरेंट सिचुएशन में देखने के लिए, तो मतलब उनको अच्छा पिक्चर आया मेरे बारे में कि कौन सी चीज़ है. तो मतलब एक जो था मेरा जो ट्रिगर मूवमेंट था, वो बहुत बड़ा हो रहा था. तो जो फ्रंट फुट की बॉल आ रही थी, वो उस पर थोड़ा लेट होता था. तो वो उन लोग के साथ उन लोग ने मुझे किया था कि 2-3 ड्रिल मतलब करने के लिए कि जल्दी ट्रिगर मूवमेंट करना है. फिर मेरी जो बैकलिफ्ट थी वो बहुत मतलब ऊपर थी, तो जो आगे की बॉल आने में लेट होता था, तो उन लोग ने उसकी बात करी थी. फिर क्या T20 और टेस्ट का गेम मिक्स हो रहा था? ऐसा आपको लगा कि कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल की जो आप बैटिंग करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके रेड बॉल की बैटिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या कुछ ऐसा हो रहा था या नहीं? पता नहीं मुझे तो. मतलब ऑब्वियसली यहाँ कंडीशन इंडिया से मतलब बहुत अलग है. yes. तो मतलब जो
वहाँ पर मतलब लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कंडीशन के हिसाब से करते हैं, यहाँ जो लोग करते हैं वो थोड़ा कंडीशन के भी हिसाब से करते हैं, तो वो थोड़ा हो सकता है। लेकिन मैं जब मतलब मेरे इतने सारे स्कोर शुरू में नहीं बने थे, अभी और आपने लेकिन 100 भी मारा पीछे, फिर आपने 80 ऑड भी मारा जी समथिंग, जी दो 50s आई, फिर जी 100 आया, फिर यहाँ पे अभी 80 है, फिर 100 है। अभी जी भी देख रहे हैं वो आपकी, अभी भी जी इनपुट्स आ रहे हैं आज जी की तो आज इनिंग्स? जी तो मतलब अभी मेरी बात हुई एक्चुअली, तो इन अच्छा। लोग का मतलब बहुत शुक्र है कि जो ये 4 दिन की मैच खेला उन लोग मतलब यूट्यूब पर जाने मतलब लाइव मैच देख रहे थे, और फिर मुझे मैच के बाद मतलब 2 दिन पहले जो 84 बने थे, जब भी मुझे फ़ोन करा था मतलब कंग्रेचुलेशन कहने, और उन लोग ने एक्चुअली पॉइंट करा था बॉल टू बॉल कि ये बॉल में ये क्या मिस्टेक थी, अच्छा। फिर ये बॉल में ये था, ये बॉल में ये करना था, तो मतलब पॉइंट पॉइंट एक्चुअली करा था और मुझे मतलब भेजा था, और मैंने फिर मतलब बाद में जाने देखा उन लोग ने जो बात करी है, और एक्चुअली मतलब उनके साथ अभी बात हुई तो उन लोग मतलब बहुत खुश थे कि जो बात मुझे की थी मतलब फर्स्ट इनिंग में, जो मिस्टेक थी वो मतलब ये इनिंग में नहीं हुई। आज की तो इनिंग्स देखने के बाद खुश थे या डांट पड़ी? नहीं, वो तो मतलब खुश थे, लेकिन क्रिकेट मतलब ऐसी गेम है जहाँ एक जगह पर नहीं रह सकते। जी एवरीडे जी मतलब जी। बेटर होना का है, हम्म। एवरीडे लर्निंग है। जब लर्निंग रुक जाती है मतलब तो गेम रुक गया। गेम रुक गया। जी। एवरीडे मतलब अभी देखते हैं जैसे बड़े प्लेयर जो रूट, शुभमन गिल, इतने मतलब सारे बड़े प्लेयर एवरीडे लर्न कर रहे हैं ना, लोग मतलब कहाँ पर है और लर्न कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट मतलब ऐसी गेम है कि एक दिन ऊपर हो सकते हैं, एक दिन नीचे हो सकते हैं, पर जो लर्निंग का वो है वो मतलब एवरीडे होना चाहिए। जो अंकल ने मुझे मतलब बताया है फ़ोन कर कर, और जो टाइम दिया है, मतलब इतना बिजी स्केड्यूल उन लोग का भी होता है, यस मुशीर और यस सरफराज का, मतलब यस। लोग करते हैं, उन लोग को प्रैक्टिस देते हैं और फिर मुझे टाइम दिया है, तो मतलब मैं बहुत शुक्र करता हूँ उन लोग का। और मतलब उन लोग ने जो चीज़ें की है मेंटल मेंटल साइड की भी और टेक्निकल साइड की भी, तो उस पर मतलब काम करने का है, और अभी आगे भी आगे आप चाहते हैं कि वो आपको इनपुट्स देते रहें हाँ, वो तो है मतलब लगातार? इतना सारा हेल्प करा है, जी। और मतलब उनके बेटे माशाल्लाह कितने ऊपर खेले हैं, सरफराज इंडिया खेल रहे कितने हैं, मुशीर ऑब्वियसली अंडर जी, 19 भी खेले हैं, मुंबई के लिए भी कितना खेले। सो परफ़ॉर्मेंस करा है। तो जब मतलब दिखता है कि इन लोग ने इतना सारा काम करा है, इन लोग के अब्बू ने इतना सारा उनके पीछे लगाया है, और इतनी सारी वैल्यूएबल मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, तो मतलब कुछ तो सही होएगा कि इतने प्लेयर इतना सारा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, इतने ऊपर खेल रहे हैं, वो भी इंडिया में इतनी यस पॉपुलेशन, इतने प्लेयर होते यस हैं, यस। इतनी कॉम्पिटिशन, और वहाँ जाने परफ़ॉर्मेंस करना, तो कुछ मतलब कोई भी देखे मतलब कुछ तो सही होएगा। तो इतना मतलब अंकल इतने बड़े कोच हैं, उनके मतलब उन लोग ने मुझे टाइम दिया जब इंग्लैंड आए थे, जब अभी इंडिया जाने के बाद भी मुझे मतलब फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक इनिंग्स मतलब देख रहे हैं आपकी जी, तो लगातार। बहुत मतलब जी। शुक्र उन लोग का है, और बहुत बड़ा थैंक्स। But you just took the name of Shubman Gill. Is he someone, means obviously Joe Root is, we know that he is the Yeah, legend, yes, but in this upcoming generation we all know that uh, you have Oli Pope, you have Harry Brook, there are multiple players, but specifically talking about Indian players, who are those players you look forward to? Means Virat Kohli just retired yes. and he is obviously another greatest player, but in this current lot, is Shubman Gill who you look forward to? Yeah, I think Shubman Gill, I think for me is a perfect player, all three formats, performance. Like I think it's easy to look at a player and think, or just look at a player and be like, he's good test player, he's good T20 player. Yes. But to have all three of them attributes, test, T20, one dayers, and to perform in all of them, that's kind of the players I look up to. So you look at Root, Brook, Gill, Jaiswal, Yeah. Rachin Ravindra, Williamson. Mm. These all players like they perform in all formats, Yeah. and that's what makes them so good. Yeah. So I think even like when I was doing 12th man, I was lucky enough to watch Shubman Gill like score 200 200. and Yeah. 150. Yeah. And I think just watching him back, it just looked easy, just easy on the eye. Everything just looked effortless. Did you have a Looked word with like him? No? nah, I You didn't wanted really. to? Yeah, I wanted to, but obviously like there wasn't much time in Yeah. between. Sure. Sure. But I think just watching him bat and play obviously gives a lot of motivation. But also, like I feel like for myself, he's like technically so good. Obviously, strong shots and stuff like that, which I look at, and to see a player like him, I think watch live. I think watching live a player is different Sure. to watching on TV. I think Yeah. you can pick up a lot of things watching live. Yeah.
but yeah, I think he's one to watch out, and I've always kind of, whenever he plays, try and watch as many balls as I can to kind of learn from him and see what I can. Thank you, Hamza. Again. Thank you so much for your Thank you for time. your time. No, Thank you. Lovely. Thank you. Now.